अस्सलाम वालेकुम। हम पिछले लेक्चर को आगे ले जाएंगे। इसमें हम लिखेंगे डिपेंडेंस ऑफ एल ऑन मोमेंट आर्म। ये मोमेंट आर्म क्या होता है, ये डायग्राम हमने पहले दी है। इसमें हमने सिर्फ ऐड किया है कि हमने डायरेक्शन ऑफ पी को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया है, आगे ऐसे वी हैव प्रोड्यूस्ड पी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। फिर ओ से हमने उस पे पी की डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर डाला है। दिस इंडिकेटर दैट इज द परपेंडिकुलर। सो वी हैव फॉर्म्ड हियर अ राइट एंगल ट्रायंगल ओपीबी। इसमें ये एंगल थीटा के बराबर है क्योंकि ये एंगल थीटा है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमने क्या किया है, वेक्टर के हिसाब से हमने वेक्टर आर को रिजोल्व किया है दो कंपोनेंट्स में। वन इज अपोजिट टू दिस एंगल थीटा विच इज दिस कंपोनेंट ओ बी, जिसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर परपेंडिकुलर, और दूसरा है अलोंग पी, पी की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है ये पी बी, दिस कॉल्ड इज पलर कंपोनेंट ऑफ आर पलर टू पी, दिस कॉल्ड इज आर पलर। सो आर के दो कंपोनेंट हो गए, आर वेक्टर के दो कंपोनेंट हो गए, आर pallor here and R perpendicular here. Now from diagram we can write from right angular triangle OPB, sin theta is equal to perpendicular, it's OB by hypotenuse by OP. Now OB को हमने कहा है R perpendicular and OP जो है वेक्टर R का मैग्नीट्यूड है simply small r. So you have R perpendicular is R sin theta, and this is our moment arm. This is called as moment arm. Moment arm जो ये OB डिस्टेंस जो है, जिसको हमने सिंबल R perpendicular दिया, इसका मतलब है this is the perpendicular distance from origin O to the direction of P. What is this? Perpendicular distance from origin O to the direction of P. Or we can say it is the shortest distance from O to the direction of P. Both are the same things. Now we can put this equation using this in the definition. किसकी definition of angular momentum, that is L is equal to RP sin theta. Now in this case जो आपका R sin theta है, इन दो के लिए आप लिखेंगे R perpendicular, so your L becomes equal to R perpendicular P. So this gives us definition of L in terms of moment arm. So you have angular momentum is equal to moment arm into linear momentum. So sometimes we call as angular momentum gives the moment of linear momentum. So it gives a turning motion of an object. I think this is enough for this dependence of L on moment arm. Now we'll take another topic, that is components of angular momentum, Cartesian components of angular momentum. That will be our next topic. I think that we can add here in this. I hope you are enjoying your winters, your vacation, but you have to prepare for the exam which is coming, which is ahead. And now let's move to Cartesian components of angular momentum. You know, in terms of Cartesian components, L is equal to R cross P. हम लिखेंगे in Cartesian components. In Cartesian components, R is written as, xi plus yj plus zk,
and p vector would be in components px, py, pz, or pz. Usually you write pxi plus pyj plus pzk. Now when we write vector L, therefore vector L is equal to R cross P will be equal to किसके बराबर होगा? So हम लिखेंगे indeterminate form. We'll not do it in detail because we know how vectors multiply and how we get the result. And in indeterminate form, it is I, j, and k int vectors in the top row. Then in the second row, we write the components of first vector. What are the components of R? X, Y, and Z. And components of P are Px, Py, and Pz. Now, this is the compact form. We can expand it and write then the components of L along x, y, and z, Lx, Ly, and Lz. For that, we have to go like this. So this is the basic L in component form in a determinant, which is a compact form. But if you like, we can expand it, and we know how to expand it. So first the I component. For I component, we erase these or think as if they are not there. Then we take product like this and like this. So it becomes ypz minus zpy unit vector I plus. Now in the next case, what we do is we go like this. अब अगर आप पॉजिटिव लेते हैं, जैसे मैंने पॉजिटिव लिया, कुछ लोग जब डिटरमिनेंट खोलते हैं वो यहाँ माइनस लेते हैं, मगर अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो क्या करना है आपको, तो ये दो रो और ये कॉलम आपने अवॉइड किया, फिर आप उसके दाएं से जाएंगे, जे के बाद दूसरा आता है जे कंपोनेंट, तो इसके आगे आप राइट साइड में यहां से शुरू करेंगे, यहां से नहीं, तो यहां से शुरू करेंगे z एंड देन x, इट विल बिकम z px minus x pz j, and then for the third one plus k, that is k component along z component. So अब horizontally और vertically आप क्योंकि k component निकालना है तो आपको यहाँ से जाना है x into this, y into this. So x py minus y px. So this is your angular momentum in vector form in terms of components of R and P. R के components हैं x, y, z, P के components हैं px, py, pz. तो L जो है L का ये फॉर्म बनता है. अब L क्या, ये x component है, ये y component है, ये z component है. So we write the components are, the components are Lx इसके बराबर, Lx इसके बराबर है, without seeing you must be able to write. x के बाद आता है y pz minus z उल्टा होगा py, y pz minus z py, ये है आपका Lx. अब Ly जो होगा, it would be y के बाद आता है z, z के बाद आता है x, z px minus x pz. इसी तरह Lz जो है, z के बाद फिर रोटेशन में x आएगा, so x py minus y px. आप देखेंगे ये वाला यहाँ पे आया, तो ये वाला यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे. So x component, y component, z component. So if we know the components of R and P, we can find the components of L along x, y, and z direction. So this is enough for today. Thank you very much.